In MC Mehta versus Union of India, AIR 1997, SC 735. Pollution of Taj Mahal case. The petitioner, Mr. MC Mehta, filed a public interest litigation in the court, drawing the attention of the court towards the degradation of the Taj Mahal due to the atmospheric pollution caused by a number of foundries, chemically hazardous industries established and functioning around the Taj Mahal, and requested the court to issue appropriate directions to the authorized concerned to take immediate steps to stop air pollution in the Taj Trapezium TTZ. Mr. Justice Kuldeep Singh, known as a Green Judge for his decisions on pollution, delivering the judgment of the court on behalf of the court, directed 292 polluting industries locally operating in the area of the main source of pollution to change over within fixed time schedule to natural gas as industrial fuel, and if they could not do so, they must stop functioning beyond 31st December 1997 and be relocated alternatives plots in the industrial estate outside Taj Trapezium (TTZ). The corporation or government would then provide alternative plots to the industries seeking relocation. The closure by December 31st, 1997 was unconditional and applicable to new and old both units. The Deputy Commissioner, Agra, and the Superintendent of Police would effect the closure of industries. The UP state government would render all assistance to the industries in the process of relocation. The court also took care of rights and benefits of the workers employed in these industries and issued necessary directions as follows. A. The workmen shall have continuity of employment in the relocated industries with same terms and conditions. B. The period between the closure and the restart shall be treated as active employment and shall be paid to their full wages. The workmen The workmen who agree to shift with the industry shall be given 1 year's wages as shifting bonus to help them settle at the new location. The said bonus shall be paid before January 31st, 1998. D. The workmen who opt for closure shall be deemed to have retrenched by May 31st, 1997 and shall be paid compensation in terms of Section 25F B of Industrial Disputes Act. These workmen shall also be paid in addition 6 years' wages as additional compensation. E. The compensation payable to the workmen in terms of this judgment shall be paid by the management within 2 months of the retrenchment. F. The gratuity amount payable to any workman shall be paid in addition. यहाँ पर MC मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक केस है जो कि 1997 में, जिसका AIR 1997 है और SC 735 है. इसमें ताजमहल को पॉल्यूशन से बचाने के लिए पिटिशनर होते हैं मिस्टर MC मेहता, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL फाइल करते हैं कोर्ट में, जिसमें वो कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हैं टुवर्ड्स द डिग्रेडेशन ऑफ द ताजमहल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फाउंड्रीज. कुछ नंबर ऑफ फाउंड्रीज से ताजमहल का एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो रहा था. केमिकली हजार्डस इंडस्ट्रीज established एंड फंक्शनिंग अराउंड द ताजमहल. केमिकली हैजर्डस इंडस्ट्री जो थी वो फंक्शन कर रही थी ताजमहल के अराउंड. ठीक है.
and requested the court to issue appropriate directions to the authorities concerned to take immediate steps to stop air pollution in the Taj trapezium. तो ताज ट्रापीजियम में इंडस्ट्री को कोर्ट को डायरेक्शन देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया. ठीक है. मिस्टर जस्टिस कुलदीप सिंह उस समय वहाँ के जस्टिस थे. नोन एज अ ग्रीन जज, उनको ग्रीन जज कहा जाता था. फॉर हिज डिसीजन एंड पॉल्यूशन, तो वो पॉल्यूशन के ऊपर वो अपना डिसीजन दे देते, इसीलिए उनको ग्रीन जज कहा जाता था उनके डिसीजंस के लिए. ऑन पॉल्यूशन, delivering the judgment of the court on behalf of the court directed 292 polluting industries, 292 polluting industries को उन्होंने कहा, locally operating in the areas of the main source, areas operating in the areas of the main source of pollution to change over within fixed time schedule to natural gas as industrial fuel. ठीक है. To change over within fixed time schedule to natural gas as industrial fuel, and if they would not do so, they must stop functioning beyond 31st December 1997 and be relocated alternative plots in the industrial estate outside Taj trapezium. So the corporation or government would then provide alternative plots to the industries seeking relocation. The closure by December 31st, 1997 was unconditional and applicable to new and old both units. The Deputy Commissioner Agra and the Superintendent of Police would effect the closure of industries. The UP state government would render all assistance to the industries in the process of relocation. कोर्ट ने राइट्स और बेनिफिट्स वर्कर्स जो कि वहाँ पर काम करते हैं, एम्प्लॉयड इन दीज इंडस्ट्रीज, एंड इशूड नेसेसरी डायरेक्शंस जो कि एज फॉलोज है. ए नंबर में वर्कमैन को कॉन्टीन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनके रीलोकेटेड इंडस्ट्रीज में विद सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ. द पीरियड बिटवीन द क्लोजर एंड इट्स स्टार्ट शैल बी ट्रीटेड एज एक्टिव एम्प्लॉयमेंट. मतलब क्लोजर और बंद, क्लोजर और ओपनिंग के टाइम को, रीस्टार्ट को एक्टिव एम्प्लॉयमेंट में कंसीडर किया जाएगा. एंड शैल बी पेड टू देयर फुल वेजेस, और उनको पूरा वेज मिलेगा उनका. वर्कमैन हु अग्रीड टू शिफ्ट विद द इंडस्ट्री शैल बी गिवन 1 year's वेजेस एज शिफ्टिंग बोनस. उनको 1 साल का बोनस मिलेगा, 1 साल का वेजेस बोनस मिलेगा, शिफ्टिंग बोनस मिलेगा, जो कि शिफ्ट करते हैं खुद को. टू हेल्प देम सेटल एट द न्यू लोकेशन, जो कि उनको हेल्प करेगा सेटल एट न्यू लोकेशन पे सेटल होने के लिए. द सेड बोनस शैल बी पेड बिफोर जनवरी 31st 1998, जो कि जनवरी 31st 1998 के पहले पे कर दिया जाएगा. वर्कमैन हु ऑप्ट फॉर क्लोजर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिट्रेंच्ड बाय May 31st 1997 and shall be paid compensation in terms of section 25F. 25F of the industries, 25F का सबसेक्शन B of industrial disputes act के अंडर में उनको पे किया जाएगा compensation. These workmen shall also be paid in addition 6 years wages as additional compensation. उनको additional compensation भी मिलेगा. E number, the compensation payable to the workmen in terms of this judgment shall be paid by the management within 2 months of the retrenchment. ये जो compensation होगा जो कि payable होगा to the workmen in terms of this judgment shall be paid by the management, वो management के द्वारा पे किया जाएगा compensation within 2 months of the retrenchment, retrenchment के 2 महीने के अंदर. The gratuity amount payable to any workman shall be paid in addition, और gratuity amount जो होगा additional payment होगा.